My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we will be discussing critical reasoning questions from the second shift of 14 December snap examination. Start करते हैं session को. And first of all, if you've not already subscribed to our channel, make sure to subscribe to our channel if you are liking the content और साथ में इस session को भी like करते हैं. चलो start करते हैं session को और first question लेते हैं. So question number 1, that is a statement and course of action based question. ठीक है, so if you've attempted it, then solution देख ही रहे हैं और otherwise try to read it and attempt it yourself first. Statement कह रहा है air pollution in the capital has deteriorated to the severe category for the fifth consecutive day. Air pollution has deteriorated to the severe category for the fifth consecutive day, leading to a rise in respiratory illness. Issue क्या है हमारा? Air pollution is the concern in this case, और उसके लिए हमें solution identify करना है कि what should be the right solution. ठीक है, what should be a step in the right direction. Course of action number 1, the government should immediately close all industrial units and construction activities until the AQI improves. Okay. Course of action number 2, people should be advised to use mask and avoid outdoor activities as much as possible. तो कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेगा यहाँ पे? पहला कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स. ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, कब के लिए? अंटिल द AQI improves. Isn't it so? Until the AQI improves, उसके बाद में फिर से you will be starting those. ठीक है, but for the time being you close down all industrial units and construction activities. क्या करना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट को? Think about it. Closing all industrial units. अब अच्छा एक चीज़ बताओ यहाँ पे. ठीक है कि ये थोड़ा प्यारा लग सकता है कि बाद में until the AQI improves लिखा है, तो मे बी तब तक क्लोज कर दो. बट द पॉइंट इज आर all industrial units polluting? Think about it. Are all polluting? क्योंकि तुम्हारा कंसर्न एयर पॉल्यूशन. क्या सारी की सारी इंडस्ट्रीज पॉल्यूट करती हैं? तो सारी तो करती भी नहीं है. तो बिना कुछ डिसीजन लिए, मैं बिना कुछ सोचे हुए, इवन इफ नो मैटर हाउ वर्स द कंडीशन बी, इफ ऑल इंडस्ट्रीज आर नॉट पॉल्यूटिंग, यू विल नॉट बी क्लोजिंग डाउन ऑल इंडस्ट्रीज फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर. Isn't it so? Because definitely air pollution is the concern. So not all industries are air polluting. So first is not the right answer for sure. 200%. क्या ये अप्रिशिएट कर रहा हूँ? समझ पा रहे हो लॉजिक क्या है? कि सिंस ऑल आर नॉट इवन एयर पॉल्यूटिंग, तो जो एयर पॉल्यूटिंग होती है अगर सिर्फ उनके बारे में मेंशन होता है तब भी एक बार हमें सोचना पड़ता है. यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली व्हाट इज मेंशनड closing down all industrial units without a thought, that is absolutely wrong, absolutely absurd. Second statement, people should be advised to use mask. Definitely using mask is the right way. और अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल. तो अवॉइड करने को बोला है, इन्फोर्स नहीं किया है. ठीक है, एडवाइस किया है, इन्फोर्स नहीं किया है. तो एडवाइस है, इन्फोर्समेंट नहीं है. सो दिस इज करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. पीपल शुड बी एडवाइज टू यूज मास्क एंड अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल. हाँ, यहाँ पे मास्क को मैंडेटरी भी कर देते तब भी ये करेक्ट एक्शन होता, कंसिडरिंग दैट एयर पोल्यूशन इज इन द सेवेयर कैटेगरी फॉर द फिफ्थ कॉन्सेक्यूटिव डे. तो इवन यूजिंग द मास्क मैंडेटरीली वुड ऑल्सो हैव बीन फाइन. ठीक है, और अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटी एज मच एज पॉसिबल, परफेक्टली फाइन. सेकंड ओनली फॉलोज, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज अ सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है कि ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, यानी कि ऑल द मेटल्स विल बी, मेटल का सेट विल बी इनसाइड द सेट ऑफ कंडक्टर्स एंड नो इंसुलेटर्स आर कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा हमको. और पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन इज नो मेटल इज एन इंसुलेटर. तो मेटल और इंसुलेटर के बीच में देयर इज अ क्लियर कट क्रॉस हमने मारा हुआ है, क्योंकि नो नो एक सेकंड, हाँ, नो इंसुलेटर आर कंडक्टर, यानी कि नो कंडक्टर आर इंसुलेटर. सो डेफिनेटली सिंस ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, सो नो मेटल कैन बी इंसुलेटर. दिस इज द करेक्ट conclusion. Second one, some conductors are metals. So this is also correct. Since all metals are conductors, तो some conductors are definitely metals. है कि नहीं? ठीक है, तो both follow option C. Okay, क्या ये पार्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, some cats are black, some black things are big. तो some cats are blacks. Is black. So some cats are black. We are sure about some cats being black. We are not sure about this other part. Whether there are some cats which are not black, we are not sure. But we are sure that some cats are blacks. Some black things are big. We are also sure about this part, that some black things are big. First conclusion, some cats are big. Definitely. अभी connection ही नहीं है हमारे पास, तो we cannot say for sure. Possible definitely है, but some cats are big, not concluded. All big things are black. All definitely not correct. So both are rejected. Neither one nor two follows is the simple answer. Okay, next question. Next is a statement
Two statements are given and cause and effect based questions. You have to identify whether there is a causal linkage. If there is a causal linkage, which statement will be cause, which one will be effect. And if there is no causal linkage, then are they effects of independent causes or are they independent causes themselves? Pehla statement keh raha hai, company has announced a 10% bonus for all the employees this month. There is a bonus, 10% bonus for all the employees this month. And second statement, company achieved a record breaking profits this financial year. So definitely these two are connected. ठीक है, प्रॉफिट्स हुए हैं और बोनस अनाउंसमेंट हुआ है. तो पहले प्रॉफिट होगा, बाद बोनस अनाउंसमेंट होगा, और ये प्रॉफिट भी इसी फाइनेंशियल ईयर में हुआ और इसी महीने में बोनस भी दिया गया. बोनस पिछले साल दिया होता तो कोई पॉइंट नहीं होता दोनों चीज़ों का. ठीक है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हैज़ बीन देयर एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बोनस हैज़ बीन अनाउंस्ड. सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट. ऑप्शन बी इज द आंसर. सेकंड कॉज है और पहला इफेक्ट है. बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं था, स्कोप ही नहीं था, डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए था. सेकंड स्टेटमेंट, two statements, cause and effect again. So price of vegetables has increased significantly in the past few weeks. Second statement, there were unseasonal heavy rains in the region last month damaging crops. तो last month heavy rains हुआ है, unseasonal heavy rains हुआ है, तो definitely जिसकी वजह से crops have been damaged, and since crops have been damaged, so there has been a increase in the vegetable prices. So definitely both are connected. Second is the cause, first is the effect. Again option is option B. Second cause and first one is the effect. Okay. Next question. Statement is given और फिर दो assumptions हैं. We have to identify which one is implicit. So statement is saying only way to achieve sustained economic growth is by investing in renewable energy infrastructure. That is being said by finance minister. Finance minister कह रहा है the only way to achieve sustained economic growth is by investing in renewable energy infrastructure. Assumption number one, no other factor such as education or healthcare investment is essential for achieving sustained economic growth. और assumption number two, investing in renewable energy is a feasible and practical option for country's economy. कह कौन रहा है? कह रहा है finance minister. ठीक है, कोई पड़ोस का पनवाड़ी नहीं कह रहा है. Finance minister is saying something. So if finance minister is saying the only way to achieve sustained economic growth is by investing in renewable energy infrastructure, so won't you think that investing in renewable energy should be a feasible and practical option for country's economy? क्योंकि अगर feasible और practical नहीं होगा, if you assume that this is not there, this is not feasible, not practical, तो finance minister क्यों कहेगा? ठीक है, अगर कोई रैंडम आदमी पर्सन कह रहा होता जिसको इकोनॉमी का कोई नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान दे रहा है, तो देन इट वुड बी सेपरेट स्टोरी. वी कुड नॉट हैव अज्यूम्ड दैट दिस इज फीजिबल एंड प्रैक्टिकल, बट सिंस फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग इज, तो डेफिनेटली दिस मस्ट बी फीजिबल एंड प्रैक्टिकल. तो सेकंड स्टेटमेंट इज, second assumption is definitely implicit. Similarly for the first one, since finance minister is also saying that this is the only way, not one of the ways, but the only way. Since this is the only way, so no other factor is essential for achieving sustained economic growth. This statement is also correct. हालांकि यहाँ पे कई लोगों ने शायद इसको implicit नहीं आइडेंटिफाई किया होगा because of no other factor mentioned. But क्यों ये implicit होगा? Because this is saying the only way. ठीक है, there is no other way. This is the way. So if this is the way, so other factors might be there, but those other factors will be non-essential. ठीक है, होंगे, हो सकते हैं, but those will be non-essential. क्या ये समझ पा रहे हो? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि those might be there, but they are non-essential. So definitely this is the only way. So this is also correct. This assumption is correct that no other factor is essential for achieving sustained economic growth. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. तो डेफिनेटली जो बाकी फैक्टर्स होंगे दोज माइट बी इनसफिशिएंट. ठीक है, नॉन एसेंशियल हो सकते हैं, इनसफिशिएंट हो सकते हैं, तो उनसे काम चलेगा नहीं. तो हमें चाहिए द ओनली वे टू अचीव सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज renewable energy infrastructure में investment. That is why both assumptions are implicit. Answer is option D. Okay, ऐसे समझो. जैसे for example, if you want to make tea, then you need tea leaves in some way or other. ठीक है, किसी ना किसी वे में तो चाहिए. In some way or other, if you want to make tea, you need tea leaves. अब definitely मिल्क भी चाहिए. चलो मिल्क ना भी मिला, वाटर तो चाहिए ना. बिना वाटर के टी थोड़ी बनाओगे. बट डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टी लीव्स. अब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वाटर नहीं है ना, वाटर भी चाहिए, बट टी लीव्स के बिना तो टी नहीं बनेगी, क्योंकि वाटर में तो कुछ भी और मिला सकते हो, बट उससे टी नहीं बन जाएगा. यू नीड टी लीव्स फॉर मेकिंग टी. इजंट इट सो? सिमिलरली द ओनली वे टू मेक टी इज यूजिंग टी लीव्स इन सम वे और द अदर. तो सिमिलर लॉजिक है यहाँ पे कि अदर थिंग्स आर इनसफिशिएंट टू मेक टी, अदर थिंग्स आर नॉन इसेंशियल टू मेक टी. ओके, क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यू आर अ मैनेजर टास्क्ड विद फिलिंग अ वैकेंट टीम लीड पोजीशन. टीम लीड की पोजीशन को तुम्हें फिल करना है. योर टीम इज करंटली सफरिंग फ्रॉम लो मोरल. तो लो मोरल इज द इशू फॉर द टीम एंड यू हैव नैरोड सर्च डाउन टू 2 इक्वली क्वालिफाइड एम्प्लॉइज. तुम्हें सर्च किसको करना है? तुम्हें फिल करना है वैकेंट टीम लीड की पोजीशन को. टीम लीड
अब एम्प्लॉय नंबर ए is a high performing innovator. High performing innovator है who prefers working in isolation and has poor interpersonal skills. Employee B is a consistent and dependable collaborator who adheres to the process and schedule, though less innovative than employee A. So you will decide what. ठीक है, employee A is a high performing innovator. ठीक है, तो performance is high but prefers working in isolation. So he is not a team worker. टीम वर्कर नहीं है. Poor interpersonal skills also. तुम्हें टीम लीड चाहिए, तो टीम लीड शुड बी अ टीम वर्कर. Team lead who prefers to work alone is not the right team lead. So definitely you need someone who is a team worker. Employee B is a consistent and dependable collaborator. Collaborator works in collaboration. So B is definitely much preferable than A. ठीक है, और adheres to the process schedule, though less innovative than employee A. Less innovative maybe, but he is a better person to be a team lead because he is a dependable collaborator. तो ऑप्शन ये आंसर होगा. विल बी प्रमोटिंग कैंडिडेट भी. अच्छा, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि अपॉइंट बोथ. डेफिनेटली दैट विल नॉट बी अ सॉल्यूशन. अपॉइंटिंग बोथ, ठीक है, सब कुछ नहीं मिलेगा दुनिया में, तो कुछ हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. किसी नैरो डाउन चॉइस पे जाना पड़ेगा. सो बिटवीन ए एंड बी हैव हमें सेलेक्ट करना है. तो या तो ए को सेलेक्ट करेंगे या फिर बी को सेलेक्ट करेंगे. ए को सेलेक्ट करते अगर कोई और फैक्टर होता, कोई और जॉब पोजीशन होता, कोई और वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता, बट फॉर दिस रिक्वायरमेंट वी नीड अ राइट पर्सन, अ टीम लीड हु वर्क्स इन द टीम, और टीम इज ऑल्सो सफरिंग विद द लो मोरल. तो हमें टीम का मोरल बूस्टअप करना है. ऐसा पर्सन चाहिए उसके लिए who is working in a team. But definitely B is a better option. और A को चूज नहीं करेंगे, दोनों को चूज करना ही नहीं है. और अपॉइंटिंग नीदर एंड हायर एक्सटर्नली, दिस इज ऑल्सो नॉट सोल्यूशन. हमें अल्टीमेटली और B के बीच में डिसाइड करना है. दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, next question. You are a project manager for a critical software launch that has been heavily marketed and is scheduled for release in 1 week. तो project manager हो and there is a critical software launch that is scheduled for release in 1 week और heavily marketing हुआ इसका. A week before the deadline, you discover a significant but non-critical bug. So there is a significant bug, but that is a non-critical bug. The bug does not cause system crashes or data loss, but it will generate noticeable user complaints. तो सिस्टम क्रैश नहीं होगा, डेटा लॉस नहीं होगा, नोटिसेबल यूजर कंप्लेंट्स होगा डेफिनेटली. फिक्सिंग द बग विल रिक्वायर अ 2 वीक डिले. अब तुम्हें रिलीज करना है क्या 1 वीक में, बट देयर विल बी अ डिले ऑफ 2 वीक्स इफ यू आर ट्राइंग टू फिक्स द बग. तो व्हाट शुड यू बी डूइंग. तुम्हारे पास डिसाइड करने के लिए क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. दो कंसर्न्स हैं. फर्स्ट कंसर्न इज देयर हैज बीन अ ह्यूज मार्केटिंग, हेविली मार्केटिंग हुआ है, और दिस इज शेड्यूल्ड फॉर रिलीज इन 1 वीक. ठीक है, शेड्यूल फॉर रिलीज इन 1 वीक, एंड इफ यू रिलीज इट इन 1 वीक, इन दैट केस देयर विल डेफिनेटली बी नोटिसेबल यूजर कंप्लेंट्स. Isn't it so? And if you do not release in 1 week, instead you delay it, postpone it, so that to fix the bug, in that case it will not be released on time. तो मार्केटिंग का कॉस्ट तुम्हारा ये जो है ये गया हैविली मार्केटिंग किया, ऐसा मार्केटिंग कॉस्ट गया. तो देयर आर टू कंसर्न्स. ईदर देयर विल बी अ मार्केटिंग कॉस्ट टू योर डिसीजन इफ यू रिलीज इन 2 वीक्स. अगर डिले किया तो ठीक है, डिले किया तो डिले कॉस्ट हुआ हमारा मार्केटिंग कॉस्ट. और डिले नहीं किया टाइम पे, शेड्यूल्ड टाइम, in that case there will be a reputation cost because user complaints आएगा. Isn't it so? तो either there will be a marketing cost or there will be a reputation cost. You have to decide क्या हमारा which one is more important. Okay. Anyway, what should you do? Option A, launch on the scheduled date and include a note in the known issue documentation. Scheduled date पे launch करो and include a note in the known issue documentation. ठीक है, don't delay it. Launch on the scheduled date and include a note. Option B, launch on the scheduled date and work quietly on a patch to fix shortly thereafter. ठीक है. Option C, delay the launch to fix the bug, ensuring the delivery of perfect product over the marketing schedule. Delay कर दो, ठीक है, so that you ensure the delivery of a perfect product over the marketing schedule. Option D, immediately inform all key stakeholders about the bug and the potential delay to reach a collective decision. Okay, ठीक है. तो एक बात बताओ, तुमने किसकी हैट पहनी है. यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यू आर नॉट होल एंड सोल ऑफ द कंपनी. Isn't it so? So that product, the product that is being launched, ठीक है, it will be affecting the company's objectives. है कि नहीं. जो भी कंपनी है उसके ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट करेगा. इफ यू आर लॉन्चिंग इट ऑन टाइम, है, मार्केटिंग कॉस्ट तो नहीं जाएगा बट रेपुटेशन कॉस्ट जाएगा बिकॉज यूजर कंप्लेंट्स आएगा. इट विल बी अफेक्टिंग द कंपनी. आर यू द होल एंड सोल ऑफ कंपनी? यू आर नॉट द होल एंड सोल ऑफ कंपनी. So definitely there are other stakeholders. So you will be taking those other stakeholders, you will be informing those other stakeholders about the costs in this decision. मार्केटिंग कॉस्ट होगा, रेपुटेशन कॉस्ट होगा. सो क्या डिसीजन लेना चाहिए, दोज स्टेक होल्डर्स शुड बी देयर इन द डिसीजन. ओके, सो यू विल नॉट बी authorized to either delay it unilaterally or launch it on time without being honest. I mean, if you are launching it on time, you are degrading the quality because you are not
informing about the bugs. Even if you are including it as a note in the known issue documentation, will it solving the problem? Definitely not. So option A not correct. Option B launching on scheduled date and work quietly. ठीक है, तो ये भी तो चीटिंग हुआ एक तरह से, एथिकली नॉट राइट. वर्क क्वाइटली ऑन अ पैच. ठीक है, अभी तो बगी लॉन्च कर रहे हो, तो नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी डिले द लॉन्च टू फिक्स द बग. अगेन दिस इज नॉट योर डिसीजन अलोन, so this is also not correct. Option D is the correct option. Immediately inform all stakeholders about the bug and the potential delay to reach a collective decision. So this is the right answer. Because you are not the whole and soul, everything. You are not the authority to decide. ठीक है, because this will ultimately be affecting the company's objectives. Hurting company's objectives. Profit को hurt करेगा, reputation को hurt करेगा. So company में other key stakeholders should be there in the decision making. So option D is the perfect answer for this question. Next one. The government plans to impose a heavy tax on all sugary drinks. This financial disincentive will lead consumers to purchase fewer of these unhealthy beverages, thereby improving overall public health. Which of the following, if true, most seriously weakens the argument? आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा? गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्पोज हैवी टैक्स. तो हैवी टैक्स ऑन ऑल शुगर ड्रिंक्स. क्यों करना है हैवी टैक्स? बिकॉज फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव, यानी कि sugar drinks will be costed now. So financial disincentive will be leading consumers to purchase fewer of these unhealthy beverages, thereby improving overall public health. यानी कि argument is lower consumption of sugary drinks, क्योंकि sugary drinks पे बात हो रहा है, सब पे बात नहीं हो रहा है. Lower consumption of sugary drinks implies better public health. ओके, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट वीकेंड करेगा वो आर्ग्यूमेंट इसी को अटैक करना चाहिए कि लोअर कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स डज नॉट नेसेसरली मीन दैट देयर विल बी अ इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ. ओके, ऑप्शन ए. which of the okay, option A, the revenue generated will be used to fund further public health campaigns. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट तो बता रहा है कि रेवेन्यू जनरेट से क्या करोगे, बट इस आर्ग्यूमेंट को तो अटैक ही नहीं कर रहा. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट द आर्ग्यूमेंट दैट विल बी वीकनिंग. वीक तो कहीं पे भी नहीं कर रहा है. ठीक है, तो न्यूट्रल बात करें कि रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे क्या करोगे. दैट इज द सेपरेट इशू. द गवर्नमेंट इज एक्टिंग प्राइमरली टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस. अगेन द सेम लॉजिक, नॉट द आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट. ये आर्ग्यूमेंट पे अटैक ही नहीं कर रहा है. ठीक है, ना तो उसके फेवर की बात कर रहा है, ना अगेंस्ट की बात कर रहा है. ये बस ये कह रहा है गवर्नमेंट इज ओनली एक्टिंग प्राइमरली टू जनरेट रेवेन्यू. ठीक है भाई. ऑप्शन सी, मेनी कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ द हाई शुगर कंटेंट इन दीज बेवरेजेस. नाउ मेनी कंज्यूमर्स आर अनअवेयर. अगेन नॉट अटैकिंग द आर्ग्यूमेंट, बट सिंस दे आर अनअवेयर तो राइट ऑप्शन क्या होता है? अवेयरनेस कैंपेन में भी. ठीक है, तो हमारा कंसर्न यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का अटैक देखना था. बट फॉर दिस, that since consumers are unaware, so there must have been an awareness campaign instead. Option D, consumers might switch to other untaxed but equally unhealthy high fat drinks. तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक हैवी टैक्स इम्पोज किया ऑन ऑल शुगरी ड्रिंक्स. तो मेनी कंज्यूमर्स विल बी स्विचिंग टू अदर अनटैक्स्ड यानी कि चीपर वेरिएंट्स एंड दोज वेरिएंट्स विच आर हाई फैट ड्रिंक्स. तो इंस्टेड ऑफ हाई शुगरी ड्रिंक्स अब क्या हुआ कि देयर आर हाई फैट अनहेल्दी ड्रिंक्स दैट कंज्यूमर्स विल बी ड्रिंकिंग. और इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या अप होगा? डेफिनेटली डाउन ही जाने वाला है. आर्ग्यूमेंट हमारा फ्लॉड हो गया कि लेस कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स डज नॉट मीन इंप्रूव पब्लिक हेल्थ. दिस ऑन मे मीन कि विद सब्स्टिट्यूशन देयर माइट बी नाउ मोर पॉपुलर हाई फैट ड्रिंक्स इन द मार्केट एंड दोज विल बी लीडिंग टू डिग्रेडेड पब्लिक हेल्थ इन जनरल. है कि नहीं? तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट दिस विल बी वीकनिंग द given argument in the statement, because maybe with the heavy taxes on sugary drinks, now people will be consuming more high fat drinks which are cheaper, which are lesser taxed. So definitely that will not be leading to improvement in the health. Okay, so option D will be the answer in this case, by substitution effect. तुमने एक वन अनहेल्दी प्रोडक्ट को तुमने कॉस्टलियर कर दिया, तो नाउ दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद सम अदर अनहेल्दी प्रोडक्ट, दैट विल नॉट बी लीडिंग टू improvement in the public health. Okay, next question. So these were all the questions. I believe जो भी हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन सेशन में, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. किसी भी क्वेश्चन में इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड आल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए. और अगर सेशन पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक बटन एज वेल, अगर अब तक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब टू द चैनल. ओके, दैट्स ऑल. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. टेक केयर.